Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is periodic motion and simple pendulum. First is periodic motion. So we will write what is periodic motion. Motion that repeats itself at regular intervals of टाइम मीन्स मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम सो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. नाउ विल राइट द सेकेंड टॉपिक दैट इज सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम. It's the simple pendulum, it's like a swing. Like here we'll write simple pendulum is like a swing. Like a swing. Simple pendulum motion is periodic in nature. Simple pendulum nature is periodic in nature. Simple pendulum motion is also called oscillatory motion since it moves from to and fro. Here we will write simple pendulum motion is also called oscillatory motion since it moves to and fro. सिंपल पेंडुलम मोशन को हम लोग ऑक्सिलरी मोशन ऑल्सो कहते हैं क्योंकि ये टू एंड फ्रो में मूव करता है. Now we'll learn with the draw diagram. So here it's the diagram of simple pendulum. Now it is composed of a small metallic bob that is known as bob. It is composed of metallic ball. So it is what called bob, and it is suspended from the rigid stand. Here we'll write here rigid stand with the help of string. ठीक है, मीन्स ये एक रिजिड स्टैंड से लटका रहता है एंड इसका लास्ट में एक मेटालिक बॉल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉब. हियर वी विल राइट अ सिंपल पेंडुलम इज composed of a small metallic ball called bob that is suspended from the rigid stand with the help of string. With the help of string. Now
famous scientist Galileo Galilei discovered an important principle of the pendulum. He discovered that the pendulum complete every swing in exactly the same time. To and fro of the pendulum, of the swing of the pendulum is called oscillation. We'll draw the figure. Here the rigid strand, the string and the bob. So our famous scientist, that is Galileo Galilei, discovered an important principle of pendulum. Means scientist Galileo Galilei ने एक discover किया था principle of pendulum. He discovered that the pendulum completes every swing in exactly the same time. Means जो हमारा ये figure है pendulum का, वो एक अपना round exactly same time में complete करता है. And to and fro of the swing. टू एंड मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना ऑफ द पेंडुलम बाय द स्विंग पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलेशन. इसमें हमारा एक और टॉपिक आता है, दैट इज व्हाट इज वन कंप्लीट ऑक्सिलेशन. कंप्लीट ऑक्सिलेशन. सो एक कंप्लीट ऑक्सीडेशन वो होता है कि मतलब हमारा ये एक बॉब है, वो अपनी जगह से पहले इस पोजीशन पे गया, देन इस पोजीशन पे आया, एंड देन अपनी जगह मतलब अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस आया. मीन्स उसका एक पूरा राउंड कंप्लीट हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन. वी विल रिपीट दैट कि हमारा बॉब यहाँ सी पे है, अब ये सी से बी पॉइंट पे जाएगा, देन ये रोटेट होके देन ए पे आएगा, बी से ए पे, एंड ए से सी पे जाएगा, तो अपने ओरिजिनल प्लेस पे ये राउंड लेके वापस आ गया. तो इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट ऑक्सिलेशन. व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड. So the time taken complete one oscillation called time period. So कितना टाइम लगा है सिंपल पेंडुलम को वन ऑक्सिलेशन कंप्लीट करने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड. लाइक एंड हमारा ये इधर रहा. सो नाउ ये हमारा ए हो गया पॉइंट, ये बी हो गया. सो
हमारा बॉब पहले ए बी पे जाएगा तो उसको लगा 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ अब बी से ए आएगा बॉब तो उसको भी वापस 1 सेकेंड लगेगा, एंड 1 एंड 1 कितना होता है 2 सेकेंड, तो टोटल उसको कंप्लीट करने में कितना लगा ऑक्सीलेशन 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड हमारा हो गया टाइम पीरियड। नाउ फ्रीक्वेंसी, frequency. So, the number of oscillation in 1 second. Number of oscillation in 1 ये हमारा ए है, ए पॉइंट से जब बी पॉइंट पे गया तो उसको लगा 1 सेकेंड। सो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन इन 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में ये हमारा पॉइंट बॉब कितना घूम रहा है, सो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर reverse of each others means frequency and time period एक दूसरे से रिवर्स होते हैं। Now frequency is reciprocal of time period, reciprocal of time period. The formula for finding out frequency and time. So first frequency 1 by t, where t is denoted as time period, and t equal means time period equal 1 by f, where f is frequency. The unit of frequency is second reverse, means second reverse and hertz. Let's find the frequency. What will be the frequency if time period is 2 seconds? उसको कंप्लीट ऑक्सीलेशन फाइंड करने में कितना लग रहा है 2 सेकेंड लग रहा है टाइम पीरियड। सो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? सो हियर द फॉर्मूला विल राइट फर्स्ट frequency equal 1 by 2, where t is denoted as time period. Time period. So the frequency will be 1 by the time period is 2 seconds. So 1 by 2, or you can write 0.5 is a frequency. Frequency will be 0.5 Hz. Second example to find out frequency. 10 oscillations in 2 seconds. What will be the frequency? Frequency. So the formula for finding out the frequency is f equal 1 by t, where t is denoted as time period. Time period. So the frequency will be, the time is 2 seconds. The time is
2 seconds. So here we will write the time period is 2 seconds and the oscillation is 10. So 2 ones are 2 and 2 fives are 10. So the frequency will be 5 Hz. Here our topic is finished about the periodic motion. I hope you all have understood it well. So please like and subscribe my channel. Thank you. Bye.